Next is Recording in progress. global warming. नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। ये मीथेन गैस है, NO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, CFCs हैं, these are the greenhouse gases. And yes, one more, carbon dioxide. And carbon dioxide are called greenhouse gases. सही है। ये गैसेस सनलाइट से आने वाली इंफ्रा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। These gases absorbs infrared radiations coming from sunlight and becomes excited. Excited means highly energetic molecules. Okay, becomes highly energetic molecules. ये तमाम molecules अपनी एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट लोअर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देती हैं। So these gases releases heat in the lower atmosphere. जिसकी वजह से लोअर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। दिस कॉजेस द राइज इन टेम्परेचर ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर। लोअर एटमॉस्फेयर इज बेसिकली ट्रोपोस्फेयर, जिसमें हम और आप एग्जिस्ट करते हैं। The increase in temperature of Earth's surface is called global warming or greenhouse effect. It's called enhanced greenhouse effect or global warming. Okay.